Hi guys, welcome to another episode of the DU-JAT series for Quant, DU-JAT IPM series for Quant. Here we'll be discussing some very important topics, some past year questions and important question types relevant for mainly the DU-JAT, but also equally important for the IPM exam. If this is the first time some of you have joined us, then let me introduce myself. My name is Anand Venkatesan. I'm a mentor and founder at Aptitude. I teach quant and probability. Uh, Aptitude is an institute which trains, provides online as well as classroom training for a variety of exams that include CLAT, ALET, and other law exams, as well as IPM, DUJAT, NM, SIMB, and many other business management exams. Uh, well, today's session is specifically focused on the DUJAT IPM exam. And I seek a little bit of support from all my viewers. Some of you are already live with me so far. Good evening. And so I would request all of you to please like, share, and subscribe to our channel and spread the word as much as you can. Really would do a word of good for us because our only objective is to reach as many people as we possibly can. Hopefully, you like what we do in these sessions, and you like the questions that we put up, and you learn and improve along the way. Right. So that's the agenda. Today's session is on functions. It's a very important topic for the DUJAT, especially for the DUJAT and IPM because DUJAT में या IPM में functions से at least 4-5 questions for sure आते हैं. So short questions हैं. That include the basic properties of functions and then can go into get into specific function types, right? So I thought we could step back today and take a look at more, general properties of functions and questions based on those, and that's what we will be discussing today. I hope that you guys were able to access the exercise for today's session from, the Telegram channel. And so without much ado, I'm going to get into today's session. Right. So here we are. The agenda for today's session is functions, and there's the first question, right? So, I'm sure you guys have all downloaded the exercise. So tell me what would be the answer to this question. Fx is equal to mod of x, right? ये 1 onto functions के properties पे based है, right? So how do I get an answer to this? Is it a 1 function? Is it an onto function? Remember, 1 होता है 1 input, 1 output, right? I should have a basic understanding of 1. Similarly, onto का मतलब होता है domain equal to codomain equal to range, right? So codomain is what is already given in the question, and range is what we will calculate, and hopefully these are the same. But I think the notional understanding onto का ये होना चाहिए, that onto का मतलब ये है कि यहाँ पे जो values mentioned होते हैं function के लिए, function के definition में, especially for y, for onto, none of these values should be impossible to get, right? Because if there are some values here that are impossible to get, then the function will not be onto, right? So for example, if I use this logic here, mod of x, is it a 1-to-1? Is it true that one input can only give me, or if I give it an input, then it will lead to a single unique output, right? But you can see that mod of -2 is equal to 2, and mod of 2 is also equal to 2. So doesn't it mean that many inputs give me the same output, right? So if many inputs give me the same output, then it will be a many-to-one function and not a 1-1 function, right? So clearly I can rule out option A here. It won't be a many-one function, right? So A rule out हो गया, C भी rule out हो गया, both तो नहीं हो सकता. फिर onto check कर लेते हैं. Now the moment I look at a modulus function, I should know that outcome of modulus function is never negative. मतलब कोई भी negative value output में नहीं आ सकता है, right? The value I get will either be 0 or a positive value. But यहाँ पे जो codomain दिया हुआ है, it tells me all real values. तो ये तो अजीब है. All real values मतलब negative values भी included है, but negative value मुझे पता है कभी मिलेगा नहीं. So never negative is what we define as the range.
and clearly codomain and range are not the same. So this is also not onto. So if it's not onto, it's not 1 1, then the answer I'll mark is option D. It is neither of the mentioned choices. Right? Does that make sense to everybody? All of my viewers who are logged in? I hope 1 1 onto check karna. I hope that you guys will remember that from school. But here was a quick recap. है ना? But point ये है कि पूरा mathematical तरीके से करना जरूरी नहीं है. Even if you have a notional understanding, 1 1 onto का, I think this question is very easy to figure out, right? Anything like a modulus or a logarithmic function or an exponential function, आप input और output जानते हो तो आप बिना question को solve किए you can actually figure out whether it is a 1 1 function or it is an onto function. All right, let's then move on to question number 2. All right, so let's try this question. 3 relations R1, R2, R3 are defined, right? So functions and relations का second topic है ये. हमने भी question functions पे किया है. This question is on relations, right? And there are 3 things mentioned here: reflexive, symmetric, transitive. I hope you remember what these are, right? Reflexive क्या होता है? When A is related to A, then it's called reflexive. What is symmetric? Symmetric क्या होता है? If A is related to B, then B must be also related to A. Right? That's symmetric. And what is transitive? मतलब अगर A is related to B and B is related to C, then a function is said to, a relationship is said to be transitive if A is also related to C. Right? So then that's called transitive. So check कर लेते हैं. Right? R1 के values दिए हुए हैं. Remember, when ordered pairs are given, the first number in the ordered pair will always be the input. So 1 is the input, 1 is the output. तो जैसे अगर मुझे इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है, R1 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, देखो इनपुट्स मेरे पास है 1, 2 and 3. So which means I should expect to get 1 1, 2 2 and 3 3. तो 1 1 भी है, 2 2 भी है और यहाँ 3 3 भी है, which means this relationship is indeed reflexive, right? Okay, how about symmetric? देखो जहां पे भी a कमा b दिखे उसका उल्टा b कमा a होना चाहिए. तो यहाँ 1 कमा 2 है, I should have 2 कमा 1. Is it there? Oh no, it's not there. I have 1 कमा 3, 3 कमा 1 भी है. I have 3 कमा 2, but इसका उल्टा 2 कमा 3 भी है और 3 कमा 3 है, इसका उल्टा 3 कमा 3 ही बनेगा, वो भी है. But somehow for 1 comma 2, I seem to be missing that pair of 2 comma 1, right? So this is not symmetric. आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है because question ने बोला तीनों true होने चाहिए. But let me still show you how to check transitive, right? So I need to choose 2 pairs first. One A comma B और B comma C choose करना चाहिए. A comma B और B comma C अगर choose करें हम कोई भी 2 pair, तो A comma C का pair मिलना चाहिए, right? And remember, this is an exhaustive condition, which means it should be true for all such possibilities. Only then it will be transitive. So, for example, यहाँ पे अगर मैं 1, 2 दिख रहा है मुझे और 2, 3 दिख रहा है, right? If I choose these two, 1, 2, 2, 3. Remember, इसमें ये output और इसमें ये input same होना चाहिए. तो 1, 2, 2, 3 अगर है तो 1, 3 होना चाहिए, बिल्कुल है ना? Similarly, 3, 1 है, 1, 2 है, 3, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है. Right? I can keep on checking, right? In this manner, I can keep on checking. But very easy to prove that this function is not a. Is it a transitive function? Yeah. For example, I could do 1, 3, and I can choose. Sorry, I can choose 2, 3 and 3, 1, right? ये दोनों है, तो मेरा ट्रांजिटिव से एक्सपेक्टेशन क्या है? 2, 1 होना चाहिए. 2, 1 है? नहीं है. If it is not present, then this function is not, this relationship is not transitive, right? So R1 you can see is neither symmetric nor transitive, but it is reflexive, right? Similarly, if I go to R2, अब यहाँ देखो inputs मेरे हैं 1, 2 and 3. 1, 1 भी missing है, 2, 2 भी missing है, 3, 3 भी missing है. तो ये symmetric तो नहीं है, sorry, ये reflexive तो नहीं है. ये similarly very easy to prove that it's not transitive. 1, 2 है, but 2, 1 नहीं है. तो ये symmetric भी नहीं है. It's not reflexive
It's not symmetric. About transitive 1,2 है, 2,3 है, 1,3 होना चाहिए, 1,3 भी नहीं है, तो this is also not transitive, right? And similarly 2,2, 3,3 nahi hai. This is not the third function R3. The third relationship R3 is not reflexive. Is it symmetric? 2,3 hai, but 3,2 is not there, so this is not symmetric either, right? And finally, if I choose 2,3 and 3,1, then 2,1 hona chahiye. That is also not there. This is also not transitive. So this question is, or none of the three is symmetric, reflexive, and transitive. So I'll have to mark option D. Question number 2, that's the correct choice. And I can see that none of these are true. Yeah. Okay. Well, Ishika is asking me from one of the previous on the previous question. She's asking me, what does it mean if a function is if onto, right? What is onto, right? So this is the question that she asks me. What is onto? Onto function वो होता है where codomain is equal to range, right? Codomain is defined in the function. Defined in the function definition. मतलब question में दिया होगा. Where do I find this? Where do I find this in the function definition? Go back to the function. ये जो है ये domain होता है और ये जो है उसका codomain होता है, right? So codomain here is given to me as all real values, right? Range क्या होता है? What we will actually get. What we will actually get as output. है ना? Input की value डालेंगे तो output में क्या मिलेगा? ये range होता है. Range कैसे निकालते हैं? Range निकालने के लिए you need to inverse the function. You need to invert the function, right? That's the technical way of doing it. If, for example, I have y is equal to mod of x, then I will say that y is equal to plus minus x, which means I can say x will be equal to, right? In fact, इसको ऐसे मत करो, right? Let me show you this, right? So this means that when x is positive or 0, y will be equal to x, and when x is negative, then y will be equal to minus x, right? तो इन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे when x is positive then x will be equal to y, and when x is equal to negative then x will be equal to negative of y, because when x is negative y will still be positive, तो y को negative बना देंगे तो x आ जाएगा, which means x can be plus y, x can also be minus y, right? But in both cases the value of the function will be positive, right? That's the clue here, right? So instead of doing all of this, right, the better thing to do is कि range क्या होता है जो actually output में मिलता है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें mod of x है, तो आप कहोगे mod of x तो हमेशा positive होता है या zero होता है, मतलब all real values जो codomain में दिए हुए हैं वो तो सारे include नहीं हो रहे ना यहाँ पे range में, so codomain और range equal नहीं है, it's not equal to codomain is not equal to range in this particular case, which means it is not onto. I hope that, Ishika, that makes sense to you. I thought I'll quickly sort of take a minute and explain this question to you. But without much ado, I will now move on to the next question. Question number 3 पे आ जाते हैं. For which value of the constant k is the following function continuous? Actually, continuity के questions नहीं करने थे आज मुझे. I think this by chance slipped in. क्या दिया हुआ है? Actually, easy question है. Fx is equal to kx when x is less than 6. मतलब 5 डालूंगा तो 5x होगा, 4 डालूंगा तो 4x होगा, 3 डालूंगा तो 3x होगा, 2 डालूंगा तो 2x होगा, ऐसे चलेगा. Sorry, 2k होगा, 3k होगा, 4k होगा, 5k होगा, right? So for a function to be continuous, right, what happens is that the value at left hand limit and right hand limit should be equal. Technically ये बोलते हैं, right? But ज्यादा easy क्या है कि अगर मैं x equal to 6 डालूं तो x equal to 6 तो ऊपर वाले वैल्यू से आएगा, right? Then f of 3 क्या आएगा, f of 6 क्या आएगा, f of 6 will be equal to k into 6, right? But for this to be continuous, it must also be equal to the constant value that is mentioned in the next code, in the next piecemeal function, right? जो दूसरा domain mentioned है, उसमें जो value है x equal to 3, sorry, y equal to 3. So this should also be equal to 3. तभी break नहीं आएगा ना.
अगर ऐसे ब्रेक आ जाता है किसी फंक्शन में तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बुलाते हैं, राइट? तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब ऐसा ब्रेक नहीं आएगा, एग्जैक्टली ज्वाइन होना चाहिए। ज्वाइन तब होगा जब y का वैल्यू सेम होगा, फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। सो व्हाट आई डिड वाज आई पुट x equal to 6, I got 6k, and then I equated it to 3, which means k should be equal to 3 by 6. Not easy question, 1 by 2. That's option A. Yeah, I hope everybody agrees with me on this question. इतना मुश्किल question नहीं है, so I thought why will this be discontinuous, Arhan? I mean, Arhan says this will be discontinuous. Why so? Unless the value of k is anything other than 1 by 2, it will actually be continuous. I'm not sure what you mean, but this function will indeed be discontinuous. So sorry, it will be indeed continuous. But if you put a number less than 6, Arhan, then the value that you get will be on only one. Let me explain this to you somehow. You're getting confused. Right. See, if for example I say that if x is greater than 2, then y is equal to 2x, and when x is less than 2, y is equal to x by 2. तो ये फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 2 या 2 से बड़ा हो तो y is equal to 2x is a line which passes through origin, right? But you want to choose that only after 2. तो x equal to 2 के बाद एक पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन जाएगा ऊपर को, right? This is then x greater than equal to 2. When x is less than 2, y should be equal to x by 2. X by 2 is also a straight line that passes through origin, but it will be much more shallow. So that line will go like this. तो देखो यहाँ पे ब्रेक आ गया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। बट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इफ आई से दैट fx is equal to x by 2 when x is less than or equal to 6, and fx is equal to 3 when x is greater than 6. See what the graph will look like when x is greater than 6. देखो यहाँ पे 6 है, 6 से बड़ा होगा तो वैल्यू y का 3 होगा, and when it is less than 6, y is equal to x by 2, which is the line that passes through origin, and at 6 it does meet the same point 3. 6 डालूंगा इधर तो 3 आएगा. So there is no break in the curve, which means this function is indeed continuous. Yeah, so I guess it depends on where you apply the test of continuity. Do you check it at x equal to 6, or do you check it at x equal to 5? Right? If you check at x equal to 5, x equal to 4, it will be continuous as well. All right, I hope that explains things to you, Arhan. I am going to move on to the next question now. देखते हैं ये a very different kind of question, right? ये fx plus y is equal to a condition दी हुई है which is true for all x and y. तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो एक तो x या y में से एक को 0 डाल के तो टेस्ट करो. And make sure that you do that. Like for example, if you put x equal to any value, let's say x equal to 2 and y is equal to 0, right? And I substitute this here. What will happen? F of 2 plus 0 will be equal to f of 2 into f of 0. यही condition आ रही है. But f of 2 plus 0 is f of 2, तो ये तो कट जाएगा. Which means what I get is f of 0 is equal to 1. ये काम की चीज है. तो नोट करो. ठीक है. और क्या दिया हुआ है मुझे? f of 3 भी दिया हुआ है. चलो, f of 3 is also given to me as 3, and finally I'm given this, right, which is a little weird because how without any expression for fx का कोई expression नहीं दिया हुआ है, but somehow it's giving me a value of a first differential as 11, and it's asking me the value of another differential at 3. तो ये calculate कैसे करें, right? तो ये question actually again limits का है, right? And again we will invoke something that we've learned, that you guys would have learned in your chapter on limits at school. What you can do is you apply that f dash x at x equal to a will always be equal to limit of h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon
Right? If you remember, this is the expression for the first differential, right? F dash x का expression ऐसा होता है, right? F dash of x at x equal to a will be limit a plus h minus f of a divided by a plus h minus a which is equal to h. right? तो ये बनता है. तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ दोनों केसेस में अप्लाई करूंगा. पहले f dash 0 पे लगते हैं. तो f dash 0 का वैल्यू क्या आएगा? दिस शुड एक्चुअली बी लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. right? और अब मैं इस एक्सप्रेशन में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा. right? f of 0 plus h will be actually nothing but f of 0 into f of h minus f of 0 upon h. तो f of 0 तो कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट कांस्टेंट है. तो it will become f of 0 which I know is equal to 1. So instead of writing f of 0 I can actually write 1. है ना, जिसको 1 लिख देता है. right? So this becomes 1 into limit h tends to 0 fh minus 1 divided by h is equal to f dash which is equal to 11. तो इसको भी हम नोट करके रख लेते हैं. ये कहीं ना कहीं मैं दूसरे एक्सप्रेशन में यूज करूंगा. right? Let's come on to f dash at 3. right? So the f dash at 3 would be equal to limit h tends to 0 f of 3 plus h minus f of 3 divided by h. और यहाँ पे भी अगर मैं वही प्रॉपर्टी लगाऊं, right? f of 3 plus h will be f3 into fh minus f3. और f3 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ है. right? So I can substitute that. So that will come constant. वैसे भी दोनों में कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा. f of 3 is 3. So this becomes 3 times limit h tends to 0 f of h minus 1 divided by h. और ये हमें इस एक्सप्रेशन में मिल गया है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. दिस बिकम्स 3 times 11. तो आंसर इज 33. right? So the answer to this question, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत वियर्ड क्वेश्चन भी है. right? If you have done this question before, then it actually makes sense to attempt this question. right? It makes sense to try this question out. But ideally एग्जाम सिनारियो में अगर इस टाइप का नया सा कुछ क्वेश्चन आए, then please leave that question, right? Let that question go. Yeah. Right. Okay, I can see that Arhan, most of you are still. It is weird, says Shika. Yes, indeed, it is weird, and I'm not surprised that you think it's so. So, ये question, I mean, I have solved it. I think अगर आपको doubt है तो you can watch the recording later on. But the point is, this is the kind of question which anyway takes a lot of time and is also very counterintuitive. So, I'm not sure कि इस type of question आपको exam में attempt करना चाहिए. Right? So let's then move on to the next question. Okay, क्या बोल रहा है? 3 solutions of the equation are given at the equation fx equal to 0, right? So if you solve fx equal to, basically इसका क्या मतलब है कि f of minus 4 is 0, f of 8 is also 0, and f of 11 is also 0, है ना? अगर ये तीनों इसके solutions हैं, मतलब ये डालने पे 0 आना चाहिए. तो क्वेश्चन बोल रहा है what about f of 2x equal to 0, है ना? तो मतलब ये 2x will be what you will substitute, ना? Which means either 2x is equal to minus 4 or 2x equal to 8 or 2x equal to 11, right? तो अगर 2x minus 4 होगा तो x क्या आएगा? minus 2 आ जाएगा. यहाँ आएगा x equal to 4, यहाँ आएगा x equal to 11 by 2. मतलब अगर आप 11 by 2 डालोगे तो 2 into 11 by 2 will become f11, which I know is 0. Similarly, अगर आप minus 2 डालोगे तो 2 into minus 2 will become minus 4, which I know is equal to 0. So the new solutions for f of 2x equal to 0 will be minus 2, 4 and 11 by 2, hence option A. Very simple question. है ना? तो डबल करने पे डबल नहीं होगा.
input half होना चाहिए for you to get the answer, right? Ishika, don't make this mistake. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question. Question number 6. Okay, exponents का question है. 6 to the power something is equal to 1 by 36. और ये देखते ही समझ में आ रहा है भाई ये होगा 1 by 6 to the power 2. और जब ये रेसिप्रोकल होता है किसी भी किसी भी एक्सपोनेंट का, I know that it will be equal to negative power of the exponent. So 1 by 6 power 2 should be 6 power minus 2. और जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा तो मुझे पता है पावर शुड बी इक्वल. तो x square plus 3x must be equal to minus 2, which means एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा. एक x square plus 3x plus 2 equal to 0, which means that अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो x plus 2 into x plus 1 must be 0, which means that either x equal to minus 2 or x equal to minus 1. Right? Both solutions will be possible. Yeah. So I should mark both minus 2 and minus 1, hence option B. Wonderful, Arhan. Yes, that's indeed the right choice. Chaliye, let's move on to the next question. Please do tell me if I'm going too fast. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे questions हैं आज, तो I thought we'll go through these questions a little quickly. See, this is a question on composition of functions. एक मिनट देता हूं आप लोगों को, बताइए आंसर क्या है इसका. I'll give you a minute. Why don't you guys tell me what you think will be the answer to this question? I get the sense that some of you have already figured this out. चलो डिस्कस करते हैं. Right? I can see that some of you guys have already marked. देखो FOG and GOF is what the question asks. FOG का क्या मतलब होता है? F of GX. तो मतलब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? पहले X सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनपुट सब्स्टिट्यूट करेंगे G में. Right? First put input in G, right? In the function G. Then what you do is you take the output of G and you put it in the function F, right? And the answer will be the output of F. Right? Like for example, अगर मैं FOG ट्राई कर रहा हूं तो पहले G में डालते हैं हम 4, राइट? इनपुट अगर 4 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 6. तो आउटपुट जो आया G का उसको F में डालो. आउटपुट 6 आया तो 6 को अगर मैं F में डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 10. तो मतलब अगर मैं इनपुट डालता हूं 4 तो G का आउटपुट आएगा 6, बट 6 डलेगा वापस F में तो आउटपुट आ जाएगा 10. So if I put 4, I should get 10. Similarly, if I put the next input 10, then output of G will be 2. इस 2 को उठा के F में डालेंगे. F में अगर मैं 2 डालूंगा तो आउटपुट मेरा 4 आएगा. तो 10, 4 हो गया दूसरा ऑर्डर्ड पेयर. And the third ordered pair is if I put input inside G as 2, G में input 2 डालेंगे तो G का आउटपुट 6 आता है. G का आउटपुट जो है F का इनपुट होगा. तो F में अगर 6 का इनपुट देंगे तो आउटपुट 10 आएगा. तो 2, 10, right? And you can see that option B seems to be the correct one क्योंकि ये तीनों तो मैच हो गए. GOF भी ट्राई कर लेते हैं. Right? This was FOG. Let's also try GOF. Right? GOF exactly उल्टा होगा कि पहले F डालेंगे. GOF मतलब G of Fx ना. So first you will put input inside F and then take that output and put it as input and see what you get out. Right? So अगर मैं पहले 3 inputs जो ट्राई करूंगा मैं,
है ना। f के लिए 3 इनपुट्स क्या ट्राई करूंगा, पहले मैं 2 डालूंगा, फिर मैं 6 डालूंगा और फिर मैं 8 डालूंगा। सो इफ आई पुट इनपुट एज 2, f विल गिव मी 4, इस 4 को यहाँ इनपुट में डालेंगे तो g विल गिव मी 6, तो यहाँ आउटपुट आ रहा है 6। फिर अगला इनपुट मैं f में डाल रहा हूँ 6, आउटपुट आएगा 10, 10 डालते हैं इसको, 10 को यहाँ ले जाते हैं, g में 10 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 2, तो 6 डालने पे आउटपुट आ रहा है 2। And finally, if you put the input as 8 inside f, I get output as 2. You take this output and you put it inside the input 2 for g, and g will give me the output as 6. So 8 comma 6, and indeed all the 3 ordered pairs match. So the answer will be option B. Can we expect a call for 150 plus? Asks me Kamal. Kamal depend करता है यार थोड़ा सा पेपर पे। आप IIM इंदौर की बात कर रहे हो क्या? If it's IIM Indore, then 150 is going to be slightly low. I think target a 200, 150 or 200 के बीच में there's a very very good chance. The closer you get to 200, I think the better it would be. Honestly speaking, I think 150 पे भी call आने का chance है. There is a chance that even on 150 you will get a call, but it's very unlikely that you will ever convert that call. Right? So my hunch is that 150 to 200 should be a good range. 200 plus will be a certainty. But 150, 180, thereabouts, 180 plus would probably be a safer score, right? Instead of 150. अच्छा, okay, let's come back to agenda. आज का जो agenda है वो functions है, वो functions पे ही टिके रहते हैं थोड़ा सा। Next question, guys. The domain and range of the given function, right? तो domain और range निकालना, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इसकी। तो डोमेन क्या होता है? पॉसिबल इनपुट्स। डोमेन होते हैं कि भाई इनपुट क्या क्या ले सकते हैं, और रेंज होता है पॉसिबल आउटपुट्स, है ना। तो डोमेन निकालते हैं पहले, इनपुट मतलब एक्स में क्या डाल सकता हूं, तो इमीडिएटली एक चीज चेक कर लिया करो आप, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आता है तो स्क्वायर रूट शुड नॉट कंटेन अ नेगेटिव वैल्यू। दैट इज यूजुअली समथिंग दैट यू चेक, which means x square plus 1 जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो इससे मिलेगा कि x स्क्वायर जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। बट ये तो अजीब बात है, किसी नंबर को स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा जीरो मिल जाएगा अगर आप जीरो को स्क्वायर करते हो। सो देन दिस इज ऑलवेज ट्रू, which means it doesn't matter what I put for x, the square root will always contain a positive value. So basically domain will be all real values, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। x को नेगेटिव, देखो x को -2 डाल सकता हूँ, -3 डाल सकता हूँ, -4 डाल सकता हूँ, -1 डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, पॉजिटिव डाल सकता हूँ, जीरो भी डाल सकता हूँ, राइट। सो एवरीथिंग सीम्स टू अग्री, सो द डोमेन विल बी इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज, राइट। रेंज निकालने के लिए यू विल हैव टू इन्वर्ट द फंक्शन, सो आई विल राइट दिस एज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली रेंज निकालने के लिए इन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बट एनीवे करके दिखा देता हूँ। So squaring this, what will happen? You'll get y square is equal to x square plus 1, which means I'll end up getting x square as y square minus 1, which means x will either be, positive or negative square root of y square minus 1. तो ये हो गया इनवर्स ऑफ द फंक्शन, राइट। इसको बोलते हैं इनवर्स। कैसे लिख सकते हैं? f इनवर्स ऑफ x is root of y square minus 1. In fact, प्लस माइनस भी है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, या इसको एक्चुअली f इनवर्स y लिखना पड़ेगा आइडियली, राइट। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज f इनवर्स x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, राइट। यू कैन राइट इट either way, बट हमें इनवर्स से मतलब नहीं है। इन्वर्ट करते ही आप कहोगे कि इनवर्स वाले फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालूं, मतलब इसका अगर मैं डोमेन निकालूं, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। सो पुटिंग नॉन नेगेटिविटी लॉजिक, यू विल से y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है ना, तो ये बनेगा y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर आपको इनइक्वालिटीज याद है तो हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, है ना, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ऑरिजिन का साइन क्या होगा। अगर मैं ऑरिजिन डालूंगा तो 0 प्लस 1 इज पॉजिटिव, 0 माइनस 1 इज नेगेटिव,
+1 into -1 will be negative. तो origin यहाँ बीच में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा. तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई when is this positive, right? When is this function equal to positive, right? So you say it's either that it's greater than 1 or it's less than -1. बट क्या है कि आपको पता है यहाँ पे वैसे भी fx is equal to स्क्वायर रूट पॉजिटिव वाला ही लगाया ना, तो ये तो वैसे ही ओनली पॉजिटिव आएगा. तो इस फंक्शन का एक्चुअली रेंज क्या आएगा 1 to infinity. इस फंक्शन का रेंज आएगा 1 to infinity. इट कैन बी 1, राइट, इफ यू पुट x equal to 0. सो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 1 के अगेंस्ट, बट ऑल द वे टिल infinity, right? I hope that makes sense, right? Because plus minus नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने प्लस वाला साइन ही लिया. प्लस वाला साइन मतलब 1 to infinity, right? That's the logic. So all real values and 1 to infinity are present in option B. So that is going to be the correct choice, right? Okay, okay. चलिए आगे बढ़ाते हैं. Question number 9 is next, and I'm going to keep tab of time. थोड़ा सा मतलब I know 7:30 को स्टार्ट किया था. We'll try and wrap up by as close as possible to 8:30. 8:30 में भी 8:40 तक खींचूंगा, but anything कुछ भी बच जाएगा तो आप लोग घर पे कुछ ट्राई कीजिएगा. Alright. So the set of real values of x satisfying the inequality. अच्छा यहाँ पे एक I think modulus रह गया है. यहाँ पे एक modulus रह गया है. Mod of x square plus x plus 6 is less than 6, right? I have is correct कर लीजिए. x square plus x plus 6 inside the modulus must be less than 6. Question says find the set of real values. Basically find the solution set. है ना? तो जब भी मॉड्यूलस आता है तो आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव कर लेना चाहिए. x square plus x plus 6 less than 6, या नेगेटिव कर लेना चाहिए. कंसीडर minus of x square plus x plus 6 is less than 6. So what does this give me? तो यहाँ 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. x square plus x is less than 0 आ जाएगा, which means x into x plus 1 is less than 0. तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे डाल के देखूं, मैं नंबर लाइन पे डाल के देखता हूँ, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आएगा 0, और अगर मैं x इक्वल टू 1 डाल दूँ तो 1 into 2 इज पॉजिटिव. तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा पॉजिटिव, -1 और 0 के बीच में नेगेटिव. ऑल्टरनेट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. ये तीनों रीजंस है. मुझे चाहिए लेस दैन 0. तो मेरा सोल्यूशन क्या आ रहा है? x लाइज बिटवीन -1 एंड 0. ठीक है, बट यहाँ सेटिस्फाई मत हो जाना. एक वैल्यू यहाँ लेके देखो, राइट? -1/2. सो चेक करते हैं. -1/2 के साथ -1/2 डालो तो -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस -1/2. सो ये आएगा -1/2 प्लस 6. इसका अमाउंट क्या आएगा? So this is 6 minus 1/4. This will become LCM ले लेते हैं ना. 4 LCM आ जाएगा. 1 minus 2 plus 24. So I'll end up getting 25 minus 2 23. So mod of 23/4 will be 23/4. तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड. तो ये is this less than 6? Yes, it is true, right? So since it is true, this is a valid solution. तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे. चलो इसको रख लेते हैं. x lies between -1 and 0. Okay, let's solve the next inequality, which is minus of this is less than 6. तो अब इसको उठा करके उस तरफ ले जाते हैं, which means it will become 0 less than x square plus x. तो ये 6 और ये plus 6 ऐड हो जाएगा. plus 12 is greater than 0 आ रहा है. तो which means that यहाँ पे 4 and 3 है. बट इसका तो भाई अगर इस क्वाड्रेटिक को आप कंसिडर करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? What is d? b square minus 4 into 1 into 12. तो ये obviously नेगेटिव आ रहा है ना. इसका d is नेगेटिव और इसका a coefficient of x square is 1, है ना. तो a is पॉजिटिव. तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है. This is always positive, right? Which means this is always true. So this given condition will be always true, right? But then that's a little dubious, because always true का क्या मतलब हुआ? This is true when the mod multiplied it with -1. So it's true when will mod multiply with -1? When x square plus x plus 6
इज लेस देन 0, राइट? तो ये कंडीशन होगी मॉड के लिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इज लेस देन 0। अगर इसका d नेगेटिव है तो दिस इज नेवर ट्रू, व्हिच मींस यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही। So the solution set here should be -1 to 0, hence option B. The tricky question, right? Tricky to the point of solution looks quite complicated, है ना? Actually solve करना काफी complicated लगता है ना? तो मैं आप लोगों को ना एक इसका शॉर्टकट और बताता हूँ, राइट? इसका एक टेढ़ा तरीका बताता हूँ, जो जैसे कहते हैं ना टेढ़ी उंगली से घी निकालना, वो ट्राई करता है, राइट? सो व्हाट यू वांट टू डू इज कि यहाँ पे रेंज दिए हुए है ना, तो आप इन रेंज में कोई वैल्यू उठा के डाल के देख लो, चेक कर लो, है ना? बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू पिक अ वैल्यू व्हिच satisfies only one and not the next. Like for example यहाँ पता -1 to 0, यहाँ -∞ to -1 और 0, तो ये दोनों तो कंप्लीटली उल्टे हैं, है ना? जो वैल्यू यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसमें एक वैल्यू चेक किया -1/2 चेक करके देखता हूँ, -1/2 डाला तो 1/4 -1/2 + 6 mod is less than 6 and we found that this is true, right? तो अगर ये ट्रू है तो ये तो पक्का अनट्रू हो गया, ऑप्शन सी कट गया। बट -1/2 जो हमने डाला था वो यहाँ लाई करेगा क्या? नहीं, यहाँ एक्चुअली ये दोनों सेम है, नहीं, तो ओनली डिफरेंस इज द ओपन वर्सेस क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर ओपन इंटरवल ही ट्रू नहीं है तो क्लोज्ड इंटरवल भी ट्रू नहीं होगा। But -1/4 will also, -1/2 will also lie here. So then I'll need to pick a value which is lying outside option B but lies inside option A. तो कोई वैल्यू डाल लो, 1 डाल लेते हैं, x = 1 डाल लेते हैं। यहाँ पे x = 1 डालेंगे तो आएगा mod of 1 + 1 + 6 is less than 6, which means 8 is less than 6, which is false. And since this is false, x = 1 is not a solution. And if x = 1 is not a solution, A can't be the right choice. So answer is option B. ये थोड़ा ज्यादा इजी है। You notice कि ऑप्शन यूज करना ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कुछ नहीं करना है, कुछ उठा के वैल्यू डालते रहो और चेक करते रहो। ठीक है, 3 या 4 वैल्यूज डालने की जरूरत पड़ सकती है, that is definitely something that can happen, but even though that happens, I think it's a very convenient method to use, right? So there you go. नया तरीका बताया मैंने आपको, एक टेढ़ा तरीका बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसे बहुत सारे टेढ़े तरीके होते हैं, बट वी जस्ट नीड टू बी अ लिटिल क्रिएटिव, है ना? By the way, if you liked my, if you like my tips and tricks and all of that and everything, please do, don't just like this video, please do share it in your, on YouTube and in other social media. Please do share it on, your Facebook and Instagram. Anyhow, मुझे पता नहीं करने वाले हूँ, but कहना मेरा फर्ज है। I hope at least some of you will consider my request, right? Anyhow, moving on. Question number 10. ये क्या है? Number of real solutions of the equation e⁴x = x. है ना? ये इक्वेशन देखते ही घबराहट हो जानी चाहिए कि यहाँ पे लेफ्ट में एक्सपोनेंट है और राइट साइड में लीनियर इक्वेशन। ये कैसे सॉल्व करें? ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, हमने कभी सीखा ही नहीं है ऐसा कोई तरीका that helps me solve an equation with, linear equation with a inequality, with a exponent. तो इस क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, which is called the graphical method. है ना? ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो बेसिकली y = e⁴x, और मतलब इसको ऐसे सोचो, y = e⁴x की जगह consider fx as a function e⁴x and consider gx as a function which is equal to x. तो बेसिकली ये लाइन, ये कर्व बनेगा y = e⁴x, ये कर्व बनेगा y = x, राइट? तो मैं fx का भी कर्व बनाता हूँ, fx का कर्व बनेगा e⁴x का कर्व। I don't know if you guys remember it, right? If you guys remember the curve for e⁴x, right? I do, so I'm going to show you. So it starts from -∞ and then slopes upwards. It intersects at 0, 1. जब मैं x को अगर 0 डालूंगा तो e⁴0 will become 1, so it is intersect at fx = 1, right? और ये x एक्सिस को कभी नहीं मिलेगा, ये असिम्प्टोट की तरह जाता है। तो ये e⁴x का कर्व है। y = x का कर्व कैसे होता है? gx का कर्व ऐसे होता है, y = x। 45 डिग्री लाइन दैट passes through origin is what y = x, है ना? तो अगर मैं इसी कर्व को इधर ही बना दूं तो
तो दोनों को एक ही कर्व पे बनाते हैं, तो भाई एक बार इंटरसेक्ट करेगा कि दो बार इंटरसेक्ट करेगा, ये मेरा क्वेश्चन। इनफैक्ट एक बार भी इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ई पावर एक्स में और एक्स में वैल्यू डाल के देख लेते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये 1 होगा, मतलब ये ऊंचा है इससे, ऊपर है इससे। If I put x equal to 1, I'll get e, which is about 2.6 something. यहाँ आएगा 1। अच्छा, ये अभी भी इससे ऊंचा है। x equal to 2 डालूंगा तो e स्क्वायर आएगा, तो 2.6 का स्क्वायर होगा, जबकि ये 2 है। तो आपको क्या दिख रहा है, गैप वाइडन हो रहा है कि शॉर्टन हो रहा है? Is the gap widening or is it narrowing down? What do you think? If I put x equal to 3, then I'll get 2.6 cube, whereas this will become 3. You can see that, you know, the gap is widening because 2.6 square is 5.76. है ना? No, 6.76. ये देखो, यहाँ पे गैप 2.6 का था, यहाँ पे गैप 4.76 का हो गया, यहाँ पे और भी ज्यादा हो जाएगा। तो गैप बढ़ता जा रहा है, और अगर गैप बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली गैप बढ़ेगा, तो इंटरसेक्शन थोड़ी होगा कर्व्स का। तो ये एक्चुअली कर्व्स इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, एक्चुअली ये कर्व ई पावर एक्स का कर्व ऐसे निकल जाएगा ऊपर। तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तो पास आएगा, बट उसके बाद कर्व होकर के ऊपर चला जाएगा। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। देयर एक्चुअली आर नो सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। Zero is the answer. Yeah, okay. Arhan has a very nice suggestion. Arhan is saying, why not take log? Bilkul. Let's try that also. And I'm going to use a different colored pen so we know that this is Arhan's solution. So अगर मैं e power x equal to x से start करूँ and you take log in the base e, right? So then this will become log in the base e of e power x equal to log of x in the base e, है ना। तो ये क्या बनेगा, e का कौन सा पावर है e पर x बनाता है, ये x बन जाएगा, x is equal to log of x। तो बात तो सेम ही हो गई ना यार, यहाँ पे भी तो आपको कर्व भी बनाना पड़ेगा, इसका कर्व भी बना सकते हो। मतलब y is equal to x is again like this and log of x is like this, and again the curves won't intersect, again the curves will widen apart, right? So again you'll have no solution at all, right? So while, you know, your suggestion is well taken, but I'm not really sure if it, you know, really helps solve the question, it makes it any simpler। ठीक है, all right, all right, कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आंसर इज सी। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on a set of natural numbers the relationship r is defined so that p is related to q if and only if the gcd of p and q is 2। so basically p is related to q if the hcf, gcd मतलब greatest common divisor मतलब highest common factor, hcf of p and q is equal to 2। मतलब इन दोनों, ये दोनों दो के मल्टीपल होने चाहिए और ये दोनों दो के ही मल्टीपल होना चाहिए, इसमें और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, ना 4 ना 2 ना 6 ना कुछ और, है ना। तो दैट इज द ओनली कंडीशन इन व्हिच ए एंड बी आर रिलेटेड, राइट। सो कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस, जो कंडीशन जिसमें p और q रिलेटेड हो। सो फॉर एग्जांपल 2 is related to any number, any even number will be related to 2, 2 will be related to 4, 2 will be related to 8, 2 will be related to 16, 2 will be related to anything, no, 2 will be related to 30 and so on। So as long as one number is 2, it will be related to everything else। if one of the other, अगर एक नंबर odd है तो फिर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि HCF 2 नहीं आएगा। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 4 इज रिलेटेड टू 6, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर तो 2 ही आ रहा है, या 6 इज रिलेटेड टू 8, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 2 ही आ रहा है। सो आई यू नो द आइडिया इज टू गेट अ क्विक सॉर्ट ऑफ जनरेट अ फ्यू वैल्यूज ताकि आप चेक कर सको बाद में। अच्छा, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, तो मुझे ये चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूंगा इज p related to p, right? As long as p is a valid input, is it related to itself? Is it true for all valid inputs? तो यहाँ पे valid input तो तभी होगा जब वो 2 का मल्टीपल होगा, इवन होगा। तो अगर कोई नंबर इवन है, is it always related to itself?
is a number always related by this function? Is it always related to itself? Well, most of you will be tempted to say yes, है ना? बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इनपुट 4 आया था, तो इज 4 रिलेटेड टू 4? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इज 2 रिलेटेड टू 2, तो आप बोलोगे इनका एचसीएफ चेक करते हैं, इनका एचसीएफ 2 आ रहा है, तो आंसर आएगा यस। बट अगर मैं कहूं इज 4 रिलेटेड टू 4, तो आप चेक करोगे 4 और 4 का एचसीएफ क्या है? 4 है, आंसर इज नो। तो मतलब कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे जहां पे a कमा a वाला पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो व्हिच मींस दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। एंड आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। a रिलेटेड टू a का लॉजिक होता है ना, तो आई चेक्ड अप एंड आई फिगर्ड आउट दैट इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? एंड इफ इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, आंसर कैन नॉट बी a, आंसर कैन नॉट बी c इक्विवेलेंस, बट आंसर कैन बी d, इट कैन आल्सो बी सिमेट्रिक, है ना? तो अब सिमेट्रिक हो या ना हो इससे समझ में आ जाएगा कि बी में सिमेट्रिक है, डी में सिमेट्रिक नहीं है, सो आई नीड टू चेक दैट। सो इज इट सिमेट्रिक और इज इट नॉट सिमेट्रिक? ओके, लेट मी चेक सिमेट्रिक। एक्चुअली ट्रांजिटिव से चेक करने से भी हो जाएगा, बट लेट मी स्टिल डू इट। सिमेट्रिक कब होता है? ए रिलेटेड टू बी मींस बी रिलेटेड टू ए, है ना? मतलब यहाँ पे एक बार वैल्यूज देख रहे हैं, 2 रिलेटेड टू 4 मतलब 4 रिलेटेड टू 2 होगा। अब एचसीएफ चेक कर रहे हो ना, तो a कमा b लिखो या b कमा a लिखो, एचसीएफ तो एचसीएफ ही होता है। तो इफ a इज ऑलरेडी रिलेटेड टू b, तो इनका एचसीएफ वैसे ही 2 आ चुका है, तो इनका भी तो एचसीएफ 2 ही आएगा, व्हिच मींस दिस इज ट्रू, व्हिच मींस दिस इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, व्हिच मींस आंसर डी नहीं हो सकता, आंसर बी ही होगा, इट इज ओनली सिमेट्रिक। So the answer to this question is option B. This function is only symmetric. This relationship, sorry, is only symmetric. It's not reflexive. It's also not transitive. है ना? Transitive भी check करके दिखाऊं? जैसे मुझे पता है 2 is related to 4 and 4 is independently related to, let's take a number, no? 4 is related to, okay, let's take another example. Let's say 2 is related to, let's say 4 is related to 6 and 6 is related to 8, है ना? इन दोनों का HCF 2 आता है, इन दोनों का भी HCF 2 आता है, बट हाउ अबाउट 4 रिलेटेड टू 8? इन दोनों का HCF 2 आ रहा है? नहीं, इन दोनों का HCF 4 आएगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। So this function is neither reflexive. This relationship is neither reflexive nor is it transitive, but it is symmetric, right? So answer is option B. Awesome. Good job, Kamal and the others who are commenting on this. Let's move on to question number 12. ये क्या बोल रहा है? Inverse of a function. इसका reading I hope you understand. Function f defined for all values from that are real to all output values where x belongs to real values and x is less than 1. Right? The inverse of the function f, which goes from r to infinity. Infinity होना चाहिए था यहाँ पे. Right? Find the inverse basically of this function. Right? That's the question. इस function का inverse निकालो. Y is equal to e power x minus e power minus x divided by e power x plus e power minus x. इसमें क्वेश्चन बोल रहा है find the inverse of this function. तो इनवर्स कैसे निकालें? तो इसमें बेसिकली e पावर माइनस x को पहले लिख देते हैं 1 by e पावर x. तो ये बनेगा e पावर x minus this and this will become e power x plus 1 by e power x. तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये न्यूमरेटर बनेगा e पावर x into e पावर x e पावर 2x, है ना, minus 1 divided by e power x divided by e power 2x plus 1 divided by e power x. और ये e power x और ये e power x कट जाएगा. So you will end up getting e power 2x minus 1 divided by e power 2x plus 1. And if this is equal to y, then cross multiply. तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? e power 2x minus 1 will be equal to y into e power 2x. Sorry for that. Y into e to the power 2x plus y. तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में हमें x के टर्म्स को अलग करना चाहिए, राइट? तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा e पावर x वाले टर्म्स को लेफ्ट में ले आते हैं, e पावर 2x माइनस y into e पावर 2x
will be equal to, और 1 को उधर ले जाते हैं y plus 1, और फिर इसके बाद जो अगला स्टेप बनेगा वहां पे मैं e power 2x कॉमन ले लेता हूँ, 1 minus y आएगा, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो इट्स बिकम y plus 1 by 1 minus y, right? So essentially if e power 2x equal to this, then next step, right, the most logical step will be take log. Taking a logarithm, what will happen? The left hand side will become 2x into log of e is equal to log of 1 plus y upon 1 minus y, है ना? तो बेसिकली log e तो होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो x हो जाएगा हाफ ऑफ log 1 plus y upon 1 minus y, right? And this in fact is f inverse of y. तो ये अगर f inverse y है तो f inverse x पूछा है ना? तो f inverse x में y की जगह से सब जगह x डाल दो, become half of log 1 plus x upon 1 minus x. Let's look for that in the option choices. That's option A. And if you get the question right, not really. Is the Euler theorem important? Asks Kamal. Euler theorem important है क्या? नहीं यार. Euler theorem जैसी चीजें अगर यूज करने की जरूरत पड़ जाए, then you are not really selecting the right questions, right? In fact, यहाँ पे भी आधे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं ना वही अटेम्प्ट करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए जो टफ है. You don't have that much time, यार जिंदगी में इतना टाइम नहीं है. Euler is not definitely not important. In fact, DU-JAT में कभी Euler पे क्वेश्चन आया भी नहीं है. Okay, if fx equal to this, then compare. What about f of minus x? सब में दिख रहा है f of minus x या f of 1 by x. तो मैं वही कर लेता हूँ, f of minus x बना लेता हूँ पहले. तो ये बनेगा 1 minus minus x divided by 1 plus minus x. तो ये क्या बन रहा है? 1 plus x upon 1 minus x. और ये होगा इसका इनवर्स, तो दिस विल बी 1 by fx, है ना? तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन रहा है? f of x अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो f of x into f of minus x equal to 1, ये बन रहा है. Is that there in any choice? This is not true. fx into f of minus x equal to, this is also not true. यहाँ पे तो minus x है ही नहीं, right? तो यहाँ पे आप 1 by x ट्राई करते हैं. Let's try f of 1 by x. What will f of 1 by x be? 1 minus 1 by x divided by 1 plus 1 by x. क्या बनेगा? x minus 1 divided by x plus 1. देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई खुद कर लेना, x और x डिनोमिनेटर पे कट जाएगा डिनोमिनेटर में, so you'll end up getting this, which by the way is like, इसमें अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो it will become minus of 1 minus x divided by 1 plus x, और ये 1 minus x upon 1 plus x क्या है? ये खुद ही f of x है, so f of 1 by x equal to minus of fx. Is that there in the option choices? Yes, that's option D. So f of x, f of 1 by x is equal to negative of fx. There in the option choice. I'm not sure, Ananya. Ananya is asking me, is there a GK class after this? I am, to be honest, I'm not really sure. क्योंकि मैंने आपका आज का शेड्यूल देखा नहीं है ऑफ अदर क्लासेस. (8:30 PM) I think legal knowledge की क्लास है. Yes, 8:30 PM. You have a class today at 8:30 PM. So what I'll do is मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ दूँगा. Could you ask me, Ananya? We'll stop this discussion in just a minute. Okay. Oh, okay. It's already 8:30. Okay, I guess then that is the end. I think Father sir needs to sort of log in and start the session for today. हमने इसी exercise को we will continue the next time we meet, which is I think on Thursday, right? Yeah. So we'll discuss Thursday. We'll discuss the remaining questions from the same exercise. Finish up with functions and then move on to the new topic. All right. So all of you who joined in, make sure that you join me again this Wednesday. ये टॉपिक फिर से ढंग से करेंगे. फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मेक श्योर दैट you know the approaches and you know tricks to solve the question faster. So please join me next Wednesday. Right.
All right, that's it for today. Thank you. And, I guess I'm going to see you next week. Sorry, on Wednesday.